Good afternoon all. Okay. Good afternoon, sir. Happens, sir. Okay. See, in the previous lecture, we had seen about environmental impact assessment. Okay. So, what is the reason behind that? We are going to assess the environment. Please, anyone? 2-3 पॉइंट इसमें से हमने पढ़ लिए हैं. We had studied. Okay. First point, status of the existing environmental condition. Second, study of project activities. Then, मतलब these 2 points we had discussed. Okay. Yes or no? Yes. Okay. Yes, sir. So please tell me what point we had seen in this, or what information your assessment is needed from in these two sentences, or you can say 2 points. Okay. क्या जरूरत है हमें? What is need? Okay, first read it. First point. What is first point? Anyone? Status of, sir, me. Yes, please continue. Status of existing environmental conditions. Okay, so what point should be covered in this point? Okay, what point we should cover in this point? कौन से point किए थे हमने? मतलब हमें देखा है कि नहीं? देखा तो है, तो कौन से पॉइंट्स देख, मतलब क्या एग्जिस्टेंस स्टेटस ऑफ द इन्वायरमेंट, मतलब क्या क्या होता है इन्वायरमेंट में, व्हाट पैरामीटर्स? Sir, sir, we can say environmental, we can say degradation, we can say climate change, the new environmental. A point समझेगा आपको कि status of the existing environmental condition. Okay, so suppose we are going to construct the one building. You can take an example of suppose one building. तो first construct करना है हमें, तो construct करना है तो we will select the site. Correct, we will select the site first. Yes or no? Yes, sir. हाँ, then after that Yes. क्या करेंगे हम लोग कि जो बिल्डिंग, सपोज एक ऐसा वाला बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं, इसके साइड में जो इन्वायरमेंट है, ओके, कुछ एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट है, तो हमें वो असेस करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सॉरी, करना पड़ेगा कि नहीं? यस और नो? Yes. हाँ, एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट मतलब क्या कि जो साइड में है, सपोज एनी टाइप ऑफ क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट, मेकिंग द प्रोजेक्ट, यू कैन से, तो उस प्रोजेक्ट की या बिल्डिंग जो भी है, प्रोजेक्ट आपका इंडस्ट्रियल है या बिल्डिंग वगैरह है, तो उस प्रोजेक्ट के जो साइड में जो इन्वायरमेंट है, जो एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट है, फर्स्ट वी हैव टू असेस. ओके, तो असेस करना है मतलब क्या? देयर आर सम पैरामीटर्स आल्सो कि which are the physical parameters. Water is a parameter, correct? है क्या नहीं है? Yes. Then air है. Then land, और लैंड के ऊपर के सब इकोसिस्टम यू कैन से, तो इकोनॉमिकल कंडीशन आल्सो देखना पड़ता है. देन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के, तो हमें करना है प्रोजेक्ट, तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, कल्चरल, देन हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, जो भी, जो यहाँ पे सपोज लैंड वी हैव चूज वन
लैंड, ओके वी हैव चूज लैंड। तो उसी एरियाज में या लैंड पे हम लोग खड़े करेंगे जो क्या बोलते हैं बिल्डिंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी फाइंड आउट द हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन यू कैन से। तो उस लैंड की हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी कि ये जो प्रोजेक्ट हो रहा है उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर कितना हो रहा है, और वो आगे जाके सक्सेस होने वाला है कि नहीं, पूरा असेस होगा। और सक्सेस भी किया हमने तो कुछ आफ्टर सम ईयर्स तो ये बिल्डिंग चलेगा या नहीं, मतलब कुछ गिरेगा, ये जो भी इश्यूज है, या सिर्फ बिल्डिंग के बारे में नहीं, पूरे आप जो भी प्रोजेक्ट करोगे इन्वायरमेंट में, इंडस्ट्री रहेगी जो भी है, तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ओके, एंड कुछ दीज आर द नेगेटिव पॉइंट की विच वी हैव टू कंसिडर। ओके, बट कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी रहेंगे, देयर मे बी पॉजिटिव पॉइंट्स। तो कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स रहते हैं कि ये जो हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे या चालू करेंगे जो प्रोजेक्ट है, जो भी प्रोजेक्ट, मैं अभी प्रोजेक्ट ही बोलता हूँ, इन एग्जांपल लेने से बेटर है कि प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट है तो लाइफ या लोगों की लाइफ में क्या अच्छी क्वालिटीज क्रिएट करता है, मतलब देता है, अच्छी अच्छी क्वालिटीज क्या देता है, ये भी होता है क्योंकि लोगों को एम्प्लॉय, मतलब लोग एम्प्लॉयबल होते हैं। ओके, सो ये पूरा हमें फर्स्ट स्टेटस ऑफ द एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन में करना पड़ता है, असेस करना पड़ता है। देन सेकेंड में स्टडी ऑफ द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, पूरा स्टडी करना पड़ेगा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। तो हमें ऐसा नहीं कि ये स्टडी किया है, सॉरी स्टडी प्रोजेक्ट का स्टडी छोड़ ही दिया बीच में और कुछ डिसकंटिन्यूटीज आए हैं, तो दिस इज नॉट गुड। ओके, सो फर्स्ट हमें करना क्या पड़ेगा कि वी हैव टू स्टडी द total activities of the project, total activities of the project। okay, so कौन से एक्टिविटीज हो सकती है फिर, प्लीज एनीवन, which we had discussed in yesterday। okay, please, कि which कौन सी एक्टिविटी हमने देखी है। suppose I have given one example, sorry, हाँ, I will give I'm giving one example कि first suppose डैम आपको बनाना है, डैम, तो हमें करना क्या 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 करना पड़ेगा, व्हाट आर द एक्टिविटीज व्हेन वी आर मेकिंग डैम, वन बाय वन। फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट, क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी हैव टू सिलेक्ट द रेफरेंस डैम। ओके, वहां पे जाके देखना पड़ेगा कि क्या लगता है, एंड फर्स्ट डिसाइड द एक्टिविटीज। तो हमें फर्स्ट क्या करना है, सेकंड क्या करना है, जैसे कि पूरा एक्टिविटीज हमें करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। ओके, तो these 2 points we had discussed in last lecture। next lecture, sorry, now we see suggestions to minimize the adverse effect, suggestions to minimize the adverse effect। so on the completion of some project, suppose it is likely that the project will have adverse impact on the environment, or either due to the construction of during the running of the industries। okay, तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन होने वाला है तो कुछ इफेक्ट होगा इन्वायरमेंट पे, तो वो इफेक्ट हमें मिनिमाइज करना है। कैसे कर सकते हैं, सपोज वेस्टेज, हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया है तो उधर साइड में वेस्टेज ज्यादा हो गया है, तो कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन मिनिमाइज द इफेक्ट द वेस्टेज।
फर्स्ट तो हमें ऐसे वेस्टेज डिस्पोज करना पड़ेगा, करेक्ट? करना पड़ेगा कि नहीं? तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द मेथड्स, कैसे करेंगे, कहाँ पे होगा, वहाँ पे पोल्यूशन क्रिएट नहीं होना चाहिए, या यू कैन से कि मे बी मे हैव द हार्मफुल टू द एलिमेंट्स इन, होता है हार्मफुल होता है तो वो नहीं होना चाहिए, तो हाउ टू मिनिमाइज द पोल्यूशन, ओके यू कैन से। तो supposing one and proper measurement to the curb, you can say pollution from the such a industries, एक पॉइंट है। तो ये इसमें सजेशंस, तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा कि सजेशंस पे हमें क्रिएट करने पड़ेंगे टू मिनिमाइज एडवर्स इफेक्ट। सपोज हम फर्स्ट दो पॉइंट देखे कि हमने फर्स्ट वी हैव टू एनालाइज और वी हैव टू चेक द एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस, देन we have studied the project activities, okay, we have studied the project activities, the third point में suggestions। suppose ये दो point हमने कर लिए हैं, but some exceptional condition you can say कि हमने कुछ अभी भी इतना स्टडी होने के बाद भी कुछ एक्टिविटीज ऐसी है कि वो पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, करेक्ट? तो वी हैव टू गिव द सजेशन, ओके, टू मिनिमाइज द एडवर्स इफेक्ट। तो हमें सजेशंस देने पड़ेंगे कि आफ्टर ये प्रोजेक्शन कंप्लीट होने आया है तो हमें क्या करना चाहिए वगैरह, ओके। सो दिस डिस्कशंस इन द सजेशंस टू मिनिमाइज एडवर्स इफेक्ट। देन थर्ड वाला सॉरी फोर्थ वाला पॉइंट है पोल्यूशन अबेटमेंट। तो पोल्यूशन कैसे कम करना है? पोल्यूशन प्रिवेंशन इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, ओके, इट इज नॉट डिफिकल्ट टास्क। You have many techniques, or many techniques are for reducing all the types of pollution, such as pollution of air, water, land, okay। so yeah, that the treatment of methodologies should be the incorporated in this project management itself. This will help to the reduce the pollution in the great extent, okay। so yeah, then it is very easy to assess the likely adverse impact of the damages to this environment also। and इसमें क्या है, और एनी टाइप ऑफ यू कैन से कि कौन सा भी आप बोल सकते हो कि हाउ टू रिड्यूस द पोल्यूशन, ओके। प्लीज एनीवन, कुछ अलग पॉइंट है इसके अलावा? नो? सर यस प्लीज। सर वो जो आपने बोला था ना मिनिमाइज, मतलब कि हाउ टू रिड्यूस द स्टेज, सो उसमें सर हम अपना वो खुद का भी कंटेनर यूज कर सकते हैं ना कर वेस्ट को सकते हैं। कम करने के लिए? ओके। और कुछ पॉइंट्स? इतना है पोल्यूशन अबेटमेंट में कैसे रिड्यूस करना है। देन फिफ्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, आइडेंटिफाइंग द डैमेजेस। तो फर्स्ट मतलब कहाँ पे डैमेज होगा ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमें, ओके। इन द ऑलमोस्ट ऑल प्रोजेक्ट्स there will be some or other adverse impact associated with the project, okay, and there can be the short term or long term effect of the project, okay, short term or long term effect of this project which will reversible or reversible or irreversible effect, okay। Then also the effect may be the restricted to the local scale such as surrounding areas, or open industry, or may have effect of a global scale such as emission of greenhouse gases, okay।
तो ऐसा जो इफेक्ट है, यू कैन से डैमेजेस, आई डोंट नो, पोल्यूशन डैमेजेस बोलते हैं, तो ये जो इफेक्ट है वी कैन रेस्ट्रिक्ट दैट। ओके, और ये ऐसा नहीं कि पूरे ये फर्स्ट ये प्रोजेक्ट के लिए है, पूरे इन्वायरमेंट में ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस वगैरह जो भी है इफेक्ट्स है। देन क्वालिफाइंग द डैमेजेस also is the important task for the predicting the likely impacts, like the intensity and duration of the exposure of a particular pollutant, or are equally important for establishing the damages. तो ये एक है, और इसमें जो इन्वायरमेंट डैमेजेस कौन से होते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये भी मतलब डैमेज मतलब वर्ड टू वर्ड मत ले लो, you can say कि exposure to the vehicular pollution C1 for small duration increases the level of the carbon monoxide, okay, and it reacts with the blood to form a COHB, then carboxy hemoglobin बोलते हैं उसको, then this is a reversible reaction hen, okay, so after some time again the carbon monoxide get removed from the blood, तो ये होते हैं damages. Then on the other hand, some toxic elements such as lead, you know the lead actually क्या है, lead may not show any immediate effects but maybe get accumulated in the blood or over the longer period of causing some permanent damages. Okay, but हमने तो lead तो देखा है कि मैगी वगैरह हम लोग खाते हैं, तो भी उसमें lead था कि बीच में कुछ तो न्यूज आया था। तो वो लेड क्या करता है कि बट इट मतलब वो ज्यादा इफेक्ट या जल्दी इफेक्ट नहीं देता है, इमीडिएट इफेक्ट नहीं मिलता है, ओके, बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट करता है। ओके, परमानेंट डैमेजेस होते हैं उसके, क्योंकि लॉन्ग टर्म है तो धीरे धीरे वो परमानेंट डैमेज क्रिएट करता है। देन दिस लाइकली डैमेज ड्यू टू द प्रोजेक्ट आर आल्सो रिक्वायर्ड टू द कैटेगराइज्ड और सिग्निफिकेंस और इनसिग्निफिकेंस, प्राइमरी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट also। तो हमें ये कैटेगरी करनी पड़ती है कि जो डैमेजेस है तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्राइमरली, यू कैन से प्राइमरी, सेकेंडरी, ये कैटेगराइज करने पड़ते हैं। तो ये पूरा असेसमेंट हुआ इसका। ओके, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ये एग्जाम में आ सकता है। देन एनर्जी सिनेरियो, तो हमें एनर्जी सिनेरियो देखना है कि क्या क्या है। तो फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉइंट है, सेकंड commercial energy and non-commercial energy, third reversible and non-reversible energy. Okay, so first point, primary and secondary energy. So primary energy sources are found or stored in the nature actually. Okay, तो कौन से है primary energy sources? Natural energy sources, okay, which we had seen in the RES also. Sir, we can say biomass. Biomass, correct. Biomass, okay. Then Sir, or we can say radiation, or we can say coal. radiation, okay. The coal is ठीक, correct है, coal. Oh, sorry, no radiation. It's a solar radiation. coal और क्या हो सकता है? एनी अदर स्टूडेंट प्लीज इन्वॉल्व हो जाओ इसमें। What are the natural resources? Which are the natural resources to be? गैस आएगा, नेचुरल गैस,
नेचुरल गैस, करेक्ट। नेचुरल गैस आएगा, वुड, ओके, ये these are the natural resources. Then सर other मेटल्स, primary, हाँ, other primary energy sources available include near nuclear energy. Okay, so nuclear energy from radioactive substances we made from the radioactive substances, that is a nuclear energy, correct. And then thermal energy stored in the earth's interior, okay, that is called as a geothermal energy. Okay, geothermal energy which stored in the earth interior part, okay, तो अर्थ के अंदर होती है. देन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द अर्थ कैविटी, ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी भी होती है. तो दीज आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस. आई थिंक समझा सबको. फर्स्ट, प्राइमरी गैस, बायोगैस सच वुड, ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, ये सब प्राइमरी है. दो अदर सही भी है, तो न्यूक्लियर एनर्जी, ओके, न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये भी है. ओके, these are the primary and secondary energy sources. Then next है पॉइंट है, कुछ एनर्जी सोर्सेस बाकी है अभी भी, कोई बता सकता है इसके अलावा कुछ? बता सकता है क्या? नहीं, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेस. फर्स्ट कमर्शियल देखते हैं. द कमर्शियल, 1 मिनट, लिखने में तकलीफ होती है थोड़ी, ये बिकॉज ऑफ माउस में थोड़ा एनर्जी ये है, ठीक है, ओके, बट ये याद रखना आपको, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल. तो फर्स्ट वी सी कमर्शियल, द एनर्जी सोर्सेज विच आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर अ डिफाइनेट प्राइस are called as commercial. Okay, so energy sources which are available in the market for a definite price are called as a commercial. तो definite price जब होगी उसको हम लोग बोलते हैं कि commercial energy sources. Okay, then commercial energy forms the basis of industrial, agriculture, transport and commercial development in the modern world. Okay, so commercial energy forms the basis of the industrial, agriculture, transport and commercial development in the modern world, you can. Then example of this commercial energy sources, this electricity, okay, electricity है example इसके. Then second coal है, oil, natural gas, okay, natural gas, these are the example of these commercial energy sources. Okay, and second is the non commercial energy sources. तो non commercial energy sources क्या है? तो the energy sources which are available in the commercial market for a price are classified as a non commercial energy. Okay, तो आपको डिफाइनेट हो सकता नहीं हुए है, but you can say the energy sources which are available in the commercial market but for a price are classified as a non commercial energy. तो जो भी प्राइस है वो नॉन कमर्शियल एनर्जी में क्लासिफाई होता है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेस. ओके, तो उसमें क्या क्या आता है? व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ द नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेस? ओके, सो firewood, first example, firewood. ओके, firewood आता है. Then agro waste in the rural areas, you know, the agro waste
एग्रीकल्चरल वेस्ट ये मैक्सिमम तो रूरल एरियाज में मिलता है हमें. देन सोलर एनर्जी फ्रॉम द वाटर हीटिंग, solar energy from water heating, yeah, for water heating. Then electricity generation, by using solar energy we are generate the electricity for drying grains, okay. Then fish and fruits, animal power for transport, एनिमल पावर जो घोड़ा बैल यूज करते हैं हम लोग पता है सबको, फॉर ट्रांसपोर्ट पर्पस. देन फिशिंग, देन लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम इरिगेशन, विंड एनर्जी फ्रॉम लिफ्टिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. मतलब नॉन कमर्शियल एनर्जी यू कैन से ये सोलर एनर्जी है, फायरवुड एग्रोवेस्ट एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, वाटर फॉर इरिगेशन, लिफ्टिंग वाटर फॉर इरिगेशन है, विंड एनर्जी फॉर लिफ्टिंग वाटर इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. बहुत सारे ऐसे नॉन कमर्शियल एनर्जी में आते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. तो ये तो हमने पढ़ा ही है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. प्लीज अभी डिसअपॉइंट मत करो मुझे, आंसर दे दो, हमने पढ़ लिया है ये. सर रिन्यूएबल में सोलर है, हाइड्रो पावर है, बायोमास है, रिन्यूएबल विंड है. हाँ, करेक्ट. यस. दिस आर द एग्जांपल ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल में एनर्जी सर सोर्स. ऑयल है, कोल है, न्यूक्लियर है, नेचुरल गैस है, ये सब है. Okay, these are the basic or main you can say कि these are the examples of renewable energy and non-renewable energy sources, correct? यस. हाँ, but I want what is the definition or actual difference? क्या हुआ? सेंस ये है दोनों में कि वो एक, हेलो, हाँ, yes, we are listening. सर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज विच कैन रिन्यू नेचुरल टाइम, मतलब हम हरदम के लिए उसे यूज कर सकते हैं. और नॉन रिन्यूएबल मींस एक लिमिटेड क्वांटिटी होता है. यस सर. Yes, very good answer, very nice. So renewable means these are the नेचुरल सर inexhaustible, जो हमेशा मिलता रहता नेचुरल और इनएक्सहॉस्टिबल है. ये एक बार यूज Yes. किया तो भी खत्म नहीं होता है. यू कैन यूज और यू कैन रिसाइकल द, करेक्ट. रिसाइकल ये बोल सकते हैं, रीयूज बोल सकते हैं. तो सपोज अभी ये जो Reuse. दिख है, हाँ, ये जब भी विंड यहाँ पे आएंगे तब ये रोटेट होगा और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी. ओके, कि एक बार विंड आ गई, बाद में जो खत्म हुआ विंड और कभी नहीं आएगी और हमें पे करना पड़ रहा है नेक्स्ट विंड के लिए, यू कैन से. तो ऐसा कुछ है कि इसमें नहीं. तो these are the non renewable sources. Okay, and renewable sources. तो नॉन रिन्यूएबल में क्या है, कोल वगैरह जो है हम लोग एक बार यूज किया तो नेक्स्ट टाइम पे करना पड़ता है. पेट्रोल, ओके, डीजल भी है. तो दीज आर दी नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि एक बार यूज किया उसके बाद हमें मनी पे करना पड़ता है, या यू कैन से कि एक्सहॉस्टेबल, वो खत्म हो जाते हैं बाद में. ओके, समझा ये? तो इसके एग्जांपल्स तो आपने बोल दिए हैं, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है. ओके, बट अच्छे से आपको ये एनर्जी सिनेरियो आना चाहिए. ये भी एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, ये हुआ
इसमें, तो कुछ इसके लिए डाउट है कि इसमें? डाउट? Anybody have a doubt? No? Yes? बोल दो कुछ तो. No, sir. No. Next, we will see कि Indian energy scenario actually. Indian energy scenario. तो ये हमें पूरा वर्ल्ड का देखा, यू कैन से ये अर्थ का बोल सबका है एनर्जी सिनेरियो. प्राइमरी में, सेकेंडरी कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल. तो ये एनर्जी सिनेरियो था. बट ये जो है सिर्फ इंडियन एनर्जी सिनेरियो, उसमें हम लोग कोल सप्लाई करते हैं, ऑयल सप्लाई करते हैं, नेचुरल गैस सप्लाई करते हैं. वी आर सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑल्सो, न्यूक्लियर एनर्जी पावर सप्लाई, हाइड्रो पावर सप्लाई. ओके, तो what amount we are supplying the or what amount, percentage of amount in supply for coal, बोल सकते हो, oil. Okay, or what percentage we are using the coal, oil, natural gas, electrical, nuclear power supply. Okay, तो ये हमें कितना परसेंटेज यूज करना है, हमें सिर्फ देखना है. ओके, इसका कुछ स्टडी नहीं है. तो कोल डोमिनेट्स मैक्सिमम, तो हम लोग कोल यूज करते थे पहले, तो पता है. ओके, तो नियर अबाउट 55% वी आर यूजिंग द कोल. ओके, और यू कैन से प्राइमरी, टोटल प्राइमरी एनर्जी प्रोडक्शन होता था 55% कोल का चलता था. देन over the year there has been a marked increase the number of natural gas and energy production from 10% in the natural. Okay, तो we are increasing कि नेचुरल यूज करना स्टार्ट किए, नेचुरल गैस वगैरह, तो कोल का परसेंटेज रिड्यूस हो गया. ओके, सो हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल कितना यूज होता है. तो इन इंडिया हैज अ ह्यूज कोल रिजर्व्स at least 84,396 million tons, okay, of proven recoverable reserves. Okay, and this amount of this almost 8.6% of the world reserves. Okay, तो ये वर्ल्ड के हिसाब से 8.6% है कोल के. तो and it may be or may last for the about 30 years at the current resource productions. Okay, and this in India is the 4th largest producer of the coal and lignite in the world. Okay, तो हम लोग कितना है, तो इन वर्ल्ड इंडिया हमारा 4th पे है कोल प्रोड्यूसर, कैसे कोल प्रोड्यूसर है. ओके, एंड लिग्नाइट प्रोड्यूसर भी है. ओके, तो इट इज अ टाइप ऑफ कोल आल्सो, लिग्नाइट. ओके, तो पता होना चाहिए ये क्या है, कोल और लिग्नाइट. ठीक, तो ये हो गया अबाउट कोल. तो कोल कितना परसेंटेज है, 8.6% ऑफ द वर्ल्ड. ओके, एंड 230 इयर्स से चालू इसका है. तो ये 4th लार्जेस्ट, ये 4th प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड, जो हमारा इंडिया है. देन ऑयल सप्लाई, oil accounts for the amount, about 36% of the India total energy consumptions. तो इस ये जो है कितना परसेंटेज है, 36%. ओके, oil, and we are consuming 36%, you can say.
then India today is one of the top 10 oil guzzling nations in the world. Okay, so India is a top 10 oil guzzling. टॉप 10 में है इंडिया एक्चुअली, जो ऑयल निकालते हैं, ऑयल सप्लाई करते हैं. ओके, तो याद रखना है, 2-3 सेंटेंस है, याद रखना है बस. 36% we are consuming the 36% oil. Okay, and next thing, India today is one of the top 10 oil guzzling, you can say, oil guzzling nations in the world. The natural gas supply. Natural gas supply. Natural gas accounts for the amount of 8.1 minute. 8.9%. Okay, the natural gas accounts for the about 8.9% for the energy consumption in the country. Okay, तो नेचुरल गैस जो एनर्जी कंजप्शन होता है 8.9% होता है. Okay, then natural gases reserves are estimated at 660 billion cubic meters. Natural gas reserves are estimated at 660 billion cubic meters. Billion cubic meters. Okay, तो इसमें इतना प्रोडक्शन या रिजर्व्स होता है नेचुरल गैस. Okay, then electrical energy supply. So the all India installed capacity of electricity powered by generating stations under the utility. Okay, utilities was 1,12,551. 1,12,581 megawatt होता है यूटिलिटी, जो है इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बोल सकते हो आप लोग. 1,12,581 यूज हो रहा है. ओके, 12,581. Then it consists of the 28,860 megawatt by hydrological. इसमें क्या 28,860 मेगावाट ये हाइड्रोलॉजिकल पावर प्लांट से आते हैं. हाइड्रोलॉजिकल 77,931 megawatt by thermal. Okay, and 2,720 megawatt न्यूक्लियर एनर्जी से आता है. न्यूक्लियर एनर्जी से आता है. Then 1,869 मेगावाट विंड एनर्जी से आता है. इतना एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है. 1,869 मेगावाट विंड एनर्जी विंड से आता है. 28,860 मेगावाट हाइड्रोलॉजिकल पावर से आता है. 77,931 मेगावाट थर्मल से आता है. 27 या 2,720 मेगावाट न्यूक्लियर से आता है. तो टोटल हमें we got the 1,12,581 megawatt energy we are consuming or we are utilize the. Okay, so next point है कि nuclear power density. Supply. Nuclear power contributes to about 2.4%. Sorry, इधर लिखना चाहिए था 2.4%. Okay, so 2.4% of the electricity generated in India. तो जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है इन इंडिया, तो we are मतलब nuclear power contributes 2.4%. Okay, then India has 10 nuclear power
reactors. India has a 10 nuclear power reactors at a 5 nuclear power stations producing electricity. Okay, so we have 10 nuclear power reactors or at five nuclear power stations producing the electricity. Okay, then hydropower supply. Next, India is endowed with the vast and viable hydropower potential for a generation of electricity, or and which only 50% has been harnessed for. Okay, so it is assessed that exploitable potential at a 60% load factor is a 60% load factor is a hydrology. So factor 84,000 मेगावाट. तो ये था कि हाइड्रोलॉजिकल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ओके. तो दिस तो I have okay. So we have completed the actually lecture. So first module we have completed here. We have completed and we go for मतलब पहले जाने से पहले हम लोग मॉड्यूल का I will give you questions, okay, for solving the in purpose actually. Okay, तो उसके मार्क्स भी रहेंगे आपको. जब किसी असाइनमेंट या कुछ है तो उसमें मार्क्स रहेंगे, मतलब टर्म वर्क यू कैन. तो क्वेश्चंस लिख लोगे क्या? Yes, sir. So write a question. State the various career opportunities. Have you written? मतलब लिख रहे हो क्या आप? मुझे बताना है. और ओके